Good morning to all of you. Am I audible? Not audible. Am I audible now? Good morning. Vipin? Okay. So in last class we finished the topic socio and religious reforms in India in 19th century, and we were discussing education system in British India. Okay. And today we have to discuss this topic in detail because in last class I have discussed only some basic information about the education system in India, that how first time the effort to promote education in India was made in the year 1830. यही देखा था ना? Education grant of 1 lakh rupees was given. Now today we are going to explore a lot of dimensions in this education policy in India, and this topic, the issues that I am going to discuss with you, the factual informations that I will discuss with you are important for your prelims exam first. Okay, there are so many questions for prelims examination. Plus they are also important for your GS mains exam. Plus the topic is equally important for essay writing. Clear? There are so many essays where the inputs of this topic you are going to use. Clear? So I will discuss this topic in very detail. Education policy we need to understand, administration we need to understand in very detail, because you are going to be a part of administration. So this is expected that you must know about the administration during the ancient time, medieval time, okay, during the British rule. In the same way, education in ancient time, education in medieval time, education during the British rule are expected to know, right? So this is the idea. Now, what I'm going to discuss with you today is the detailed analysis of the same topic. So the education policy, basically this part, education policy, we are going to discuss, and especially in this module, we are going to discuss about the education policy during British rule. But when we divide British rule, it is basically divided into two parts. British rule is divided into two parts. You all know about this. One is company rule, that is indirect British rule, company rule, or that is also called indirect British rule. And the second approach is crown rule, and that is called डायरेक्ट ब्रिटिश. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया ना, आई विल एक्सप्लोर द एरियाज कि कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए. कंपनी रूल एंड दिस इज इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, एंड क्राउन रूल is direct British rule. So this we can trace out the development from 1757 till 1857-58. Clear? And the crown rule development we can trace out from this period, 1857-58 to 1947. Clear? During company rule, the first effort was made here, that is the year 1830. I have already discussed with you, this is a prelims question also. Charter of 1813, education grant of how much? 1 lakh rupees annually. But before this, what was the issue? Okay, there was no any progress in the education system. Now there are many words that we need to know. Clear? We can use those words in essay writing, and those words, those concepts will also be helpful in understanding the core idea behind the colonial policy in India. For example, one word is Anglicism. One word is Anglicism. The second word is Orientalism. In education, okay, these are the important ideas which are related to the important debates. The third is evangelicalism. Evangelicalism, or this is also called evangelists. Evangelists. This is the third approach. And the fourth approach here is utilitarian thoughts and beliefs. The fourth is what? Utilitarian thoughts and beliefs. And these four approaches were, you can say that at that time, the guiding principles behind the education system in India. Anglicism, Orientalism. In last class, I have discussed the basic idea about Orientalist,
Anglicist controversy. This is evangelicalism. And then the next is utilitarian thoughts and debates. Got it? In companies rule period, what we see that before 1813, there was some individual effort, or you can say that efforts by Warren Hastings to promote what? Orientalism. I have already discussed. I will discuss today. आज भी करूंगा उसको. कल लास्ट क्लास में तो थोड़ा सा 10 मिनट्स टाइम था, तो मैंने बताया था जल्दी जल्दी में. तो यह द बेसिक पर्पज, बोर नहीं होना है. जो भी पढ़ाऊंगा ज़्यादा टाइम लूंगा, ठीक है ना. इट्स नॉट लाइक द रेगुलर क्लासेस, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड. ठीक है, कभी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतना ज़्यादा पढ़ा दिया, वही काम आएगा आपके जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना. So this is not possible in the regular scenario. So here we have already discussed about Warren Hastings and his efforts to promote Orientalism. किया था, जैसे कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, right? All this was set up. Then Christian missionaries come 1813 onwards. Clear? And after this, what we see that Christian missionaries will come, and in the name of promoting, okay, you can say that education and health, they will promote conversion. And lastly, here there is another important development in 1835 that is known as Macaulay's Minute. ये सारे prelims का question है. This is known as what? Macaulay's Minute. This is an important development. 1935. After this, in the same period, there is another important topic. Again, when you look at the question bank, you will find there are questions in prelims. That is Wood's Dispatch. Wood's Dispatch. Year is what? 1854. ये भी तो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है. वुड्स डिस्पैच रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम. अच्छा, आफ्टर 1854 there is revolt of 1857, and now in 1858 what happens? Crown rule comes to India. Crown rule में क्या होता है? Hunter Education Commission. This is in Crown rule. Hunter Education Commission. Hunter Education Commission. We are going to discuss in detail about this Education Commission also 1882 to 83. This is one topic. Then we will discuss about, okay, Indian Universities Commission 1902, and it will give some recommendations, and on the basis of that Indian Universities Act will come in 1904. So after this, the next important development here is Indian Universities Commission 1902, and by these recommendations an act will come that is known as Indian Universities Act 1904. That is Indian Universities Act 1904. Indian Universities Commission, and by the recommendations we see here, Indian Universities Act 1904. Got it? Then there is another important development, that is Sadler Commission. Okay, Sadler Commission, right? This also we will discuss. Sadler Commission. Year is 1917. Year is 1917. Then the next important topic here is, okay, right, development of education by Government of India Act 1919. यहाँ एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. क्लियर? पहले टॉपिक समझो. एक तो प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि सैडलर कमीशन इज रिलेटेड टू. गॉट इट? इतना सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, राइट? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बाय द एक्ट ऑफ. अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटीज एक्ट है ना, this Indian University Commission was Raleigh Commission. Indian University, the name of this commission was Raleigh Commission. Okay, so this can be asked in a prelims question, that Raleigh Commission is related to. So the answer will be education. Indian Universities Commission was Raleigh Commission 1902, and it will submit its report. Recommendations will be Indian Universities Act 1904. एक तो चार्ट से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको. You will get the question from the chart itself. यही से क्वेश्चन मिल जाएगा. Raleigh Commission. Clear? Then Sadler University Commission. Then education according to the Act of 1919. And then we will discuss another committee. Read this: Hartog Committee on Education. Hartog Committee on Education. Hartog Committee on Education 1929. Again prelims question match करने के लिए आ सकता है. Hartog Committee, Raleigh Commission, all these are related to education. Hartog Committee 1920. अच्छा देखो, हार्टोग कमेटी के बारे में क्या खास बात है. साइमन कमीशन ईयर वाज
किसी को याद है साइमन कमीशन ईयर? 27। ठीक है, तो साइमन कमीशन ने एक दूसरा कमीशन सेटअप किया था. इट मींस दिस कमीशन वाज द ऑक्सिलरी कमीशन ऑफ साइमन कमीशन. साइमन कमीशन हैज सेट अप अ कमीशन टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज व्हाट हार्टोग कमिटी. तो याद रहेगा ना, 1927 से रिलेट कर लेना 1929 में. सो राइट दिस दैट इट वाज एन ऑक्सिलरी कमिटी ऑफ साइमन कमीशन. राइट दिस, ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट हो सकता है. हार्टोग कमिटी वाज an auxiliary committee of Simon Commission. Hartog Committee was an auxiliary committee of Simon Commission. और साइमन कमीशन का ईयर क्या है? 1927. राइट. हार्टोग कमिटी वाज एन ऑक्सिलरी कमिटी ऑफ साइमन कमीशन, 1927. नाउ द next point is what? Sargent plan of education. Write this. This is also related to education. Sargent plan of education. Sargent plan of education. And what is the year of this Sargent plan of education? Right, 1944. Sargent plan of education, 1944. This is one part. Sargent plan of education, 1944. Sargent plan of education, 1944. एक तो क्वेश्चन आपको यहीं से प्रीलिम्स में मिल गया कि नेम ऑफ द कमीशन रिलेटेड टू व्हाट? एजुकेशन. One thing. Now one important idea that when the national movement was in progress, national movement को कब से मानते हैं? 1885 onwards. And formation of regional political association started 1830s onwards. 1857 के बाद ये process और fast हो गया. It means the national sentiments started consolidating after this revolt of 1847. Clear? After the formation of Indian Nation Congress, there is growth of nationalism. During स्वदेशी movement, we are demanding कि सब कुछ क्या होना चाहिए? स्वदेशी. तो education भी कैसा होना चाहिए? स्वदेशी. So this is a common idea that what is the basic aspiration of the Indian people, that which kind of education we want, कैसा education हम चाहते हैं. ठीक है, अब बेसिक एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कौन करेगा? उस समय के जो ग्रेट पर्सनालिटीज होंगे. फॉर एग्जांपल, गांधी विल रिप्रेजेंट, टैगोर विल रिप्रेजेंट. मेरी बात समझ गया ना? ऑरबिंदो विल रिप्रेजेंट. So is it important to know that we should know that, okay, that during the freedom struggle, what was the basic aspirations of the Indian people, that which kind of education we want? Should you know about what is the Gandhi's vision on education? Should you know about what is Ravindranath Tagore's vision on education? Yes, this is a part of debate and you will get UPSC questions also. और essay में भी यूज होगा, अभी बताऊंगा. टाइम लगेगा इस चैप्टर में बिकॉज ये टारगेट है चैप्टर का essay राइटिंग ऑल्सो. ठीक है ना? सो दिस विल टेक टाइम. So write here that the third outlook here, the third perspective. What is the third perspective? Third perspective is a basic understanding of a basic understanding of the aspirations and demands of Indian people. Aspirations and demands of Indian people. Okay, the a basic understanding of aspirations and demands of Indian people. Okay, for the system of education in India. For the system of education in India. कि इंडिया में सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या हो? व्हाट इंडियन पीपल आर डिमांडिंग. नाउ we should have some basic idea. I will discuss some ideas, but here, okay, the ideas of some of the most important personalities, like the ideas of Gandhi's. What is Gandhi's views on education? Gandhi's views on education. We must know this. We must know. ठीक है, कि गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था? What was the Gandhi's concept of knowledge? Knowledge के बारे में गांधी का क्या ओपिनियन था? What Gandhi was advocating? What should be the method of instruction? What should be the method of evaluation? Clear? What should be the aim of the education? यही सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे. The same we will discuss in Tagore also. According to Tagore, what is education? What is knowledge? What is value-based education? What is the meaning of freedom and discipline that is to be inculcated in the students? And what should be the method of knowledge? What is the method of medium of instruction? Okay, all this opinion of टैगोर. तो टैगोर का भी ओपिनियन देख सकते हैं.
right? So Tagore's views on education. Tagore's views on education. What is the Tagore's? हाँ, previously आया था और ये एक approach है, got it? And by this approach, when you will read ना, you can write the answer of any question. Education से related कुछ भी आएगा, इससे आएगा, you will be able to write. This was a prelims नहीं, mains question, previous year question, right? Okay. So have you got this? There are some more approaches and dimensions that I will explore in the essay part. History में हम यही रुक जाएंगे, but in essay part I will discuss with you that what is the teaching of Bhagavad Gita, what is the teaching of Rig Veda, right? What is the teaching of our ancient teachings, what is our ancient knowledge system कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा. कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट, राजा राम मोहन रॉय, इन ऐसे विल डिस्कस ऑल. नाउ हैव यू गॉट सम आइडिया दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस? ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. I will discuss a lot of things with the help of slides, PPT, but you don't need to prepare all the PPTs. I will bring PPTs and will mark some core important words, technical words and facts. In your notes, what you will do? You will write only the important facts or opinions, because answers we need to write in 150 words. क्वेश्चन क्या होगा? टैगोर और गांधी दोनों का एजुकेशन डिस्कस करो, तो आप ज्यादा कंटेंट बना के नहीं लिख सकते. सो द बेसिक पर्पज इज टू डिस्कस and to highlight the key features, keywords, and that you will write in your notes. Okay, in this way you will be able to revise also. So discussion is the most important thing, और discussion के लिए मैं आपको ज्यादा कंटेंट आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, ज्यादा चीजें बताऊंगा, but it does not mean कि हर वो चीज आपको लिखनी है, right? You have to understand and you have to write the core facts, important facts for prelims. So let's discuss our ideas with the help of some slides. Okay, so we are coming to some slides here. So we are going to discuss first. Here we are going to discuss British education policy in India, right? And we will start with the British education policy in India during the company rule. Now first I am displaying here some of the statements. In essay class, in the essay discussion I have discussed with you कि essay में एक format क्या होता है? One format is what? Statement based essays. And the meaning of those statements is always evolving in nature, it's not static. ऋग्वेदा का कोटेशन होगा तो आप आज की एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी लिखोगे. गॉट इट? क्लियर? सो व्हाट वी शुड डू, रीडिंग द स्टेटमेंट्स फर्स्ट वी शुड डिकोड द मेन थीम ऑफ द स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, I am just displaying some of the images, some of the statements here, that education is something which makes man self-reliant and selfless. This is the statement of Rig Veda, but UPSC will not write. केवल स्टेटमेंट लिखते हैं, ऋग वेदा वगैरह तो लिखते नहीं. सो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टेटमेंट? टॉपिक क्या हो गया? एजुकेशन. द सेकेंड स्टेटमेंट इज एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन. यहाँ पे भी मेन थीम क्या हो गया? इफ यू आर डिकोडिंग कि मेन थीम ऑफ द एसे, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द एसे? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द एसे? एजुकेशन. हियर नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग ऑन अर्थ देन विजडम. और विजडम कैसे आएगा? एजुकेशन से आएगा. सो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टेटमेंट? Education. Education is the manifestation of the divine perfection already existing in man. विवेकानंद. क्या मार्क करना है? एजुकेशन. लिखना है एजुकेशन पे ही है. And in this way, I will discuss with you at least 50 such statements where the main theme will be the education. And in class we will discuss, ऐसे की क्लास में हम क्या करेंगे? एजुकेशन में कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कितने ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है? कितने statements या कुछ dialogues आप use कर सकते हो. All this I will discuss, and you will write the same content with some modifications in all the essays. Now by education I mean an all-around drawing of the best in the child and man, body, mind and spirit. Gandhi ji's statement is about education. Here also we are writing about the education. In this statement of Sir Aurobindo also we are writing about education. Here also we are writing about education. The statement of Plato. Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and perfection of which it is capable of. What is the main theme? Education. बिल्कुल घबराना नहीं. Statement based essays को देखकर. The next statement is statement of Rousseau. Education of the man commences at his birth. Before he can speak, before he can understand, he is already instructed. Experience is the forerunner of the perfect. Again the main theme is education. Aristotle's statement, again the main theme is education.
एंड प्लेटो, एरिस्टोटल और विंडो आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स। ऐसे में भी आप पढ़ते हो। तो अगर आपने कुछ कोर एरियाज तैयार कर लिए, प्लेटो, ऑरविंदो, एरिस्टोटल, गांधी, टैगोर, मेरी बात समझ गए, तो क्या होगा, रूसो, यू आर गोइंग टू यूज दीज पॉइंट्स इन योर आंसर एंड दिस विल हैपन विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन। ये केवल और केवल डिस्कशन से होगा, बुक्स खरीदने से नहीं होगा कि जाके प्लेटो की एक बुक खरीद के लाए और पढ़ने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पूरा फोकस प्रीलिम्स पे और मेंस के लिए डिस्कशन बेस्ड अप्रोच। नाउ वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक, all those statements and there are some other statements also I will discuss in the essay class. Now when you will write essay, जैसे मान लो एजुकेशन पे essay लिख रहा हो, कोई भी स्टेटमेंट है तो उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा, राइट? सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप एंशिएंट इंडिया उठाओगे, वैदिक पीरियड उठाओगे, राइट? बुद्धिज्म, नालंदा, तक्षशिला, ये सब बताओगे, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम। देन यू विल राइट a short para on medieval knowledge system. Then in modern India, colonial period, okay, you will write about the contradiction between the colonial system of education and the between the aspirations of the Indian people. आपका कितना अच्छा historical perspective तैयार हो गया। And then you will write 5 perspectives I will discuss with you education में, कि education के 5 perspectives कौन कौन से हो सकते हैं, और वो 5 पर्सपेक्टिव्स केवल एक थीम से जुड़े होने चाहिए कि 5 डिफरेंट थीम से, 5 डिफरेंट थीम से। जैसे वन शुड बी रिलेटेड टू सोसाइटी, वन शुड बी रिलेटेड टू इकोनॉमी, वन अप्रोच, ठीक है, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसे वो 5 पर्सपेक्टिव्स वाला फॉर्मूला याद रखना है मेन बॉडी के लिए, एंड यू विल बी एबल टू राइट एक्सीलेंट एसे विद द हेल्प ऑफ द जीएस मटेरियल। जीएस में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, अपने जीएस पॉलिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज करो, और फॉर्मेट नहीं चेंज करना है। एक बार जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, सो यू विल हैव टू कीप दैट फॉर्मेट कंटिन्यूड इन योर माइंड। बार बार फॉर्मेट चेंज करोगे तो एग्जाम में आप इससे लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बीच में ट्रैप होने लगोगे। ओके, सो प्रैक्टिस वन फॉर्मेट, ओके, एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 थीम्स। आई एम सेइंग 50 थीम्स, एजुकेशन इज वन थीम। इसी तरह से women empowerment, women challenges is the another theme. Environmental impact, environmental challenges is the third theme, right? Technology is a curse or a boon, it is the fourth theme. Cyber security challenges, it is the fifth theme. ऐसे कितने themes तैयार कर लेने हैं? Challenges before the agricultures, farmers, economy का एक theme तैयार कर लेना है। ऐसे कितने themes तैयार करने हैं? 50. And you will find that all the essays that were previously asked in UPSC will come under that theme. वो सारे उसी थीम में आ जाएंगे, और उसमें आप अपना कौन सा नॉलेज यूज करोगे? जीएस का नॉलेज यूज करोगे, ठीक है ना? तो ये भी नॉलेज यूज करोगे एजुकेशन में, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नाउ द टॉपिक स्टार्ट्स हियर, ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एजुकेशन, ओके, ड्यूरिंग द colonial rule, right? Now here it can be discussed under two different education policies. I have already discussed with you education during the company rule and education during the crown rule. There can be two perspectives here, right? The policies which were followed by East India Company till 1813, the policy drastically changed from 1813 onwards till the Second World War. You already know the meaning, because East India Company started ruling from 1757 to 1813. Which policy they followed? So they did not interfere. They did not interfere. They did not provide official help and assistance. There are some efforts, okay, but these efforts are individual efforts of the governors and the governor generals or the administrators. Okay, finally in 1813, what happened? So the company announced that we will give 1 lakh rupees grant for education. It will be given annually, but the irony of the fact is that this fund was not released for the next 10 years. ठीक है, it means that the British were not very much willing to promote education in India. Whatever they were doing it half-heartedly. तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बात तो पता चल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, okay, was doing the efforts half-heartedly. They were not willing to promote the system of education in India. That's why the fund was released in 1813, and it was, okay, it was announced in 1813, released in 1823. But what is was it spent in 1823? खर्च हुआ 1823 में? नहीं. Till 1835, we see what? A controversy between the members of the committee. Okay, this shows the unwillingness of the company to promote education in India. ये क्या है? ये
filtered content. It is the essence of the theme. Now we are again moving to some other points here. Education under company rule. Now I will discuss some approaches here with you. The meaning of the words, it is very much important to know. So write this in your notebook. Evangelists or evangelicalism. What is this? Evangelists or evangelicalism. What is this idea? बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है इवेंजलिस्ट. ठीक है, इवेंजलिस्ट. हु वर इवेंजलिस्ट? तो देखो, इवेंजलिस्ट वेर अ ग्रुप that believed that the task of education was to transform the Indian personality. What they are believing? That what should be the task and purpose of education? The task and purpose of education is to, okay, transform the personality of Indian people. Personality of Indian people. और ये ग्रुप कहाँ पे डोमिनेंट है? ब्रिटेन में. There is a lobby. There is a lobby of thinkers in Britain, and this lobby was very powerful, and India was a colony of Britain. और ब्रिटेन में कॉफी हाउसेस में बैठी हुई ये लॉबी क्या डिस्कस करती है? कॉफी हाउस में बैठे हुए ये लोग और क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में what should be the purpose of the education? The purpose of education is to transform the Indian personality. ये लॉबी सीसीडी में बैठ के डिस्कस कर रही है ब्रिटेन में. They are saying that the transformation should be like they wish to create. However, was a religious one. अब देखते रहो. The transformation should be like this lobby wish to create. इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, इंडियंस की पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम किया जाए, ये कौन बैठ के तय कर रहा है? लंदन के कॉफी हाउस में बैठ के एक थिंकर्स का ग्रुप तय कर रहा है. ठीक है, और वो थिंकर्स का ग्रुप, उसका और थॉट क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है. That until 1813, देखो, the company had been very careful to keep missionaries at a distance from state activities. 1813 के पहले, 1813 में क्या हुआ था? Christian missionaries were allowed for the first time to come to India. पहली बार ये अलाउ किए. This is a prelims question also, mark कर लेना. When Christian missionaries were allowed first time to come to India, the answer is 1813. It means before this they were not allowed. Why they were not allowed? Just give me the answer. क्यों कंपनी ने अलाउ नहीं किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को? Exactly. Good lessons they have learned from the Portuguese. कि अगर इंडियंस के मैटर में, कल्चरल मैटर में, सोशल मैटर में अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो इंडियंस के नाराज होने का खतरा है. 1757 they established power. Got it? Now they are focusing on trade. Good Puja, they are focusing on trade, and now they are thinking that if we will interfere, Indians will become angry. तो नाराज नहीं करना है. पोर्टुगीज को नाराज किया था, तो क्या करना है? अपीस करना. अपीस कैसे करेंगे? नॉन इंटरवेंशन. इसके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को बाहर रखो, आने मत दो इंडिया में. ठीक है, ये पॉलिसी थी कंपनी की. दिस हैज बीन रिटन हियर दैट द कंपनी हैड बीन वेरी केयरफुल टू कीप मिशनरीज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम स्टेट एक्टिविटीज. बट the missionary groups were often frustrated by the lack of support from the company. मिशनरी ग्रुप्स नाराज थी कंपनी से. ठीक है, क्यों नाराज थी कंपनी से? क्योंकि कंपनी उन्हें इंडिया में आने का परमिशन नहीं दे रही थी. कंपनी वाज नॉट गिविंग देम परमिशन टू कम टू इंडिया. नाउ व्हाट हैपेंड? देखो, एंड द मिशनरीज वेर आल्सो एंग्री विद द ओरिएंटलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट. क्या है? 1813 के पहले ओरिएंटलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट क्या है? मिशनरी वाज आल्सो एंग्री. देखो, व्हाट इज द ओरिएंटलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट? समझो, अगेन प्रिलिम्स फैक्ट. कंपनी के आने के पहले व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स became गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, व्हाट ही डिड? कलकत्ता मदरसा वाज सेट अप. याद है? संस्कृत कॉलेज बताया था बाय जोनाथन डंगन विद द हेल्प ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. ये 1781 में कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज इन विच ईयर? 1791. इसके बाद जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है तो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के क्या बना देता है? फोर्ट विलियम कॉलेज. इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स हेल्प करता है किसको? विलियम जोन्स को. क्या एस्टैब्लिश करने के लिए? एशियाटिक सोसाइटी. और एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या है? इंडिया के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना. ये सब काम क्या है? ओरिएंटलिस्टिक वर्क. ऑल दीज आर द ओरिएंटलिस्टिक वर्क. व्हाट इज द ओरिएंटलिज्म?
where you are promoting vernaculars, Persian, Sanskrit, where you are trying to explore the Indian culture, Indian heritage. यही सब काम क्या होता है? Orientalist. तो बताओ 1813 के पहले वॉरेन हेस्टिंग 1781, 1791, 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज, राइट, 1784 एशियाटिक सोसाइटी, ऑल दीज आर द एफर्ट्स और नॉट? ये सारे के सारे एफर्ट है कि नहीं? तो क्रिश्चियन मिशनरीज इस बात से भी नाराज थी कि भैया एक तो हमें जाने नहीं दे रहे हो इंडिया, और दूसरा वहां पे क्या कर रहे हो आप? ओरिएंटलिज्म को प्रमोट कर रहे हो। तो बहुत नाराज थी क्रिश्चियन मिशनरीज, राइट? However, they remained an important lobby in England. They were an important lobby in England, Christian missionaries. Missionary activities in India took off after the Charter Act of 1813. मिशनरी एक्टिविटीज इंडिया में कब टुक ऑफ हुई, कब आगे बढ़ी? आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, व्हेन द मिशनरीज वर अलाउड टू कम टू इंडिया। इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट, द व्हाट इज द इवेंजेलिकल्स कंसर्न। समझो इस बात, इवेंजेलिकल्स कंसर्न अबाउट हाउ बेस्ट टू इंश्योर द स्प्रेड ऑफ Christian principles led them to question of curriculum. It means they are motivated to promote what? Okay, Christian principles in India. ये उनका मेन मोटिव है। They were clear that the indigenous knowledge system that is favored by the Orientalists had to be discussed. क्या कह रही हैं ये मिशनरीज? कि इंडिया में जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है, कौन प्रमोट कर रहा था? हु वाज प्रोमोटिंग? एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज। मिशनरीज आर सेइंग दैट नो नो नो, दिस पॉलिसी नीड्स टू बी डिस्प्लेस्ड। इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। चार्ल्स ग्रांट, ओके, ये प्रीलिम्स में आएगा नहीं, बस एक ओपिनियन है, बता रहा हूँ, जो नहीं आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। Charles Grant was an important commentator in India and England. What he argued that polytheism bred multiple allegiances that resisted the centralized authority required by the state. वो क्या कह रहा है कि इंडिया में जो polytheism based religion है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो रिलीजियस आइडेंटिटी है लोगों की, ये इंडिया में ब्रिटिश को सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में और बेहतर ढंग से एस्टैब्लिश होने में एक ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन का काम कर रहे। इट मींस द रिलीजन ऑफ इंडियन पीपल, द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ इंडियन पीपल, द पॉलीथेइज्म इज रिस्ट्रिक्टिंग द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर इन इंडिया। यानी कि भारत का धर्म अंग्रेजों के लिए क्या है? खतरा है। इंडिया की, इंडियन लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी अंग्रेजों के लिए क्या है? खतरा है। सर सैयद अहमद खान ने भी बताया था आपको, क्या टास्क दिया गया था उसको, लास्ट क्लास याद करो, ठीक है? डब्ल्यू हंटर को एक टास्क दिया गया कि भाई पता लगाओ क्या मुसलमान जो है हिंदुस्तान के, इनके दिमाग में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अभी भी जिहाद का प्लान है? एंड देन विलियम हंटर रोट द बुक दैट इज इंडियन मुसलमान। लास्ट क्लास में बताया था। तो गवर्नमेंट वाज वेरी अलर्ट हियर। नाउ व्हाट हैपेंस, द इवेंजेलिकल्स वर आल्सो हॉस्टाइल टू सेकुलर एजुकेशन। वो सेकुलर एजुकेशन देने के भी खिलाफ थे इंडिया में। कहा इंडिया में अगर सेकुलर एजुकेशन दे दोगे तो इंडियंस का दिमाग कुछ ज्यादा खुल जाएगा, और ज्यादा खुल जाएगा तो अपना रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दो चीजें नहीं करनी है। क्या? इन इंडिया यू डोंट हैव टू प्रमोट द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन इंडिया यू हैव टू सप्रेस द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ पीपल। और तीसरा, वी डोंट नीड टू गिव सेकुलर एजुकेशन। तो कैसा एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं ये इवेंजेलिकल्स? इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन and promotion of Christianity. Got it? So what is evangelical approach? Right? European knowledge without the Bible was dangerous because it gave the native mind political thoughts of liberty and power. देखो दूसरा evangelical thinker क्या कह रहा है कि इंडिया में अगर हमने यूरोपियन नॉलेज का मतलब हो गया सेक्युलर नॉलेज। गॉट इट? इन इंडिया इफ वी प्रोमोटेड सेक्युलर नॉलेज, मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी, मेडिकल साइंस पढ़ा दिया, लेकिन अगर उसके साथ साथ रिलीजन वाला एजेंडा नहीं जोड़ा आपने, बाइबल नहीं जोड़ा, तो ये खतरनाक हो जाएगा। गॉट इट? इट मींस दे आर प्लानिंग टू सबऑर्डिनेट Indian people culturally also, that if we will give you secular education, if we will give you education of the West, education of the science, education of the mathematics, but at the same time we will try to promote our Christian religion, okay, Bible। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये किसके लिए खतरनाक हो जाएगा?
colonial rule in India, right? What is the next point? The secular instruction in English at, अब देखो, हिंदू कॉलेज कलकत्ता that was established in 1816. यहाँ पे क्या promote हो रहा था? Secular education. Secular education. Clear? This education was promoted. Got it? Scientific and rational education was promoted. Now this lobby in England started saying that this is not good. In Calcutta, in Hindu college, you are giving what? Secular education. Science and technology आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, जिसमें क्रिश्चियनिटी वाला एलिमेंट आप डाल नहीं रहे हो, बाइबल डाल नहीं रहे हो, तो खतरनाक होगा। यहाँ से जो इंडियंस पढ़ के निकलेंगे, उनके अंदर जब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स आएंगी, तो इंडिया में कॉलोनियल रूल के प्रेजेंस के लिए क्या हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा। द इंडियंस हु विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस हिंदू कॉलेज, okay, once they are educated, the kind of nationalist sentiments that will develop in the mind of these Indians will be very much threatful for the presence of colonial rule in India. Now I hope you are getting some idea about evangelical thought and belief. What is evangelical thought and belief? Point 1. अब इसको summarize करो कि क्या है point. Okay, don't write complex sentences or the words. Evangelical thoughts में क्या है? Write point 1. An important lobby in England. An important lobby in England. England की एक important lobby है. An important lobby in England. Right, next point. Okay, right. They supported promotion of. They supported promotion of Christianity in the colonies. केवल इंडिया की बात थोड़ी ना थी. They were talking about all the colonies. They supported for the promotion of Christianity in the colonies. ठीक है. Third point. What is the third point? They supported Orientalism or they opposed Orientalism and its efforts. Opposed. So write this. They opposed efforts of Orientalism or Orientalistic efforts in the colonies. They opposed Orientalistic efforts in the colonies. इसको oppose किया. Right? Right. Next point. They also opposed secular education without Bible. Scientific education ऐसे लिख लो. They also oppose, पहले ये point लिखो. They also oppose secular education. They also opposed secular education. What about scientific education? तो देखो, scientific education should be given, but the condition is what? Along with Bible. So write this. Favored scientific education plus Bible. एग्जाम में भी हम ऐसा ही लिख पाएंगे बच्चों की तरह. इससे ज्यादा कोई सेंटेंस वेंटेंस बनाने का चांस नहीं है. ठीक है. साइंटिफिक एजुकेशन प्लस बाइबल. अब आप समझ गया ना? What they will support, what they will demand, that the Christian missionaries should be sent to India or not? Yes. So read this. They mount pressure on the British government that they mounted pressure on the British government that they mounted pressure on the British government that Christian missionaries should be sent to India. Christian missionaries should be sent to India. Okay. To promote social work. To promote social work. Promote social work. Right, next point. As a result, by the Charter of 1813, as a result, by the Charter of 1813, as a result, by the Charter of 1813, Christian missionaries were sent to India. As a result, by the Charter of 1813, Christian missionaries were sent to India. As a result, by the Charter of 1813, Christian missionaries were sent to India. Okay. To promote social work, education, to promote social work like education and health, right? This. To promote social work like education and health. To promote social work like education and health. To promote social work like education and health. Right? They were sent to India to promote social work like education and health. Clear? Right. Right, next point. But what will happen? What they will do when they will come to India? It is clear now. अब इस पे कोई डिबेट रह गया कि वो इंडिया में आएंगे तो क्या करेंगे? They will promote Christianity, no doubts. Read this. Okay. The Christian missionaries started promoting Christianity in India. Okay. Started promoting conversion in India. Started promoting Christianity in India. Started promoting conversion in India.
स्टार्टेड प्रोमोटिंग क्रिश्चियनिटी, स्टार्टेड प्रोमोटिंग कन्वर्जन। तो जो मेन पर्पस था वो क्या था, इंडिया को कल्चरली सब्जुगेट करना, यही पर्पस था ना। गुड, वी कैन राइट दिस पॉइंट। सो द मेन पर्पस वाज to bring India under cultural subjugation of Britain. So the main purpose was to bring India under cultural subjugation of Britain. ये पूरा का पूरा टॉपिक इससे मटेरियल है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल। क्लियर? टू ब्रिंग कल्चरल सब्जुगेशन, राइट, ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटेन। लिख लिया ना आपने कि इंडिया को क्या करना है, ब्रिटेन के। नाउ एंग्लिसिज्म यू ऑल नो, लास्ट क्लास में बताया था, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट यू ऑल नो। नाउ this term is new, utilitarian philosophy. Clear? This is very important term, you should know this. So what is utilitarianism? So dekho, it is a theory of morality. So in ethics GS paper also, in ethics GS paper 4 also, you read about this philosophy, utilitarian philosophy. This is a theory of morality. And what does this theory advocate? So it advocates that dekho, actions that foster happiness or pleaser, right? Actions that foster happiness or pleasure. And it also oppose actions that cause unhappiness or harm. So simple is what it support and what it opposes. What it support? So it support those actions that promote what? Happiness. Those actions that promote happiness or pleasure. And what it opposes, it opposes those actions that promote unhappiness and harm। ठीक है ना? तो ये क्या करता है, ऐसे एक्शंस को सपोर्ट करता है जो सोसाइटी में हैप्पीनेस को प्रमोट करे, प्लेजर को प्रमोट करे। ऐसे एक्शंस को अपोज करेगा जो सोसाइटी में अनहैप्पीनेस या हार्म को प्रमोट कर रहा है। सो इफ इट इज focusing on here actions of the humans, so obviously it is a theory of morality. Got it? Now suppose I am asking you one question, that utilitarian thought will support the practice of custom of sati or oppose according to this definition? Oppose, because custom of sati is promoting what? Unhappiness. It is promoting what? Harm. So the action of custom of sati should not be regarded as moral. मेरी बात समझ गया ना? If you ask utilitarians that the widow should not be given the right to remarry, what they will say? No, widow remarriage, okay, right should be given. Widow remarriage ये promote किया जाना चाहिए society में, because if you will promote widow remarriage will promote what? Happiness. It will promote what? Pleasure. ठीक है? तो in India, for example, have you heard the name of Lord William Bentinck? When custom of sati was when this custom of sati abolition act was passed in 1829, who was the governor general of India? Lord William Bentinck. बेंटिक ही था, उसी के टाइम में ये लेजिस्लेशन पास हुआ। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय विच थॉट? यूटिलिटेरियन थॉट। तो इंडिया में जो भी गवर्नर और गवर्नर जनरल्स अमरीश पुरी टाइप नहीं है, वो सारे के सारे किस थॉट से प्रेरित है? यूटिलिटेरियन थॉट। फॉर एग्जांपल लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, ये सारे थॉट किस थॉट से इंस्पायर है? यूटिलिटेरियन थॉट। गॉट इट? ये बात हमेशा याद रखना। तो यूटिलिटेरियन थॉट, व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज वेरी क्लियर नाउ। इट इज व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म? इट इज अ थियरी ऑफ मोरालिटी, राइट? एंड व्हाट डज इट एडवोकेट? इट just talks about the actions। अपने लैंग्वेज में लिखा करो डेफिनेशन, डोंट राइट द बुकिश लैंग्वेज, दैट इट इज द। अब आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप ब्रेक कर दो इसको, पहला पॉइंट लिख लो, थियरी ऑफ मोरालिटी। इट टॉक्स अबाउट एक्शंस, इट सपोर्ट्स दोज एक्शंस दैट प्रमोट हैप्पीनेस, ठीक है, और प्लेजर, एंड इट अपोजेस दोज एक्शंस दैट सपोर्ट्स अनहैप्पीनेस, दैट ठीक है। तो ऐसे ब्रेक करो डेफिनेशन को। मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ इस क्लास में, क्योंकि कोचिंगों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, मेरे ऊपर तलवार लटकी रहती है, ठीक है, कि 30 क्लासेस में खत्म करना है, हर बैच के बाद प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, ठीक है ना? तो यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा आराम से, ठीक है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? देखो, व्हेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेकिंग
सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस। अब एक और इसमें नया डायमेंशन जुड़ गया, राइट? फॉर एग्जांपल, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। व्हेन you are taking decisions about society, about economy, about political system, so you will make policies. So what utilitarian thought will say? It will say that when we are making policies, so what we should consider, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात पे देनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग में? पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी में किस चीज को प्रमोट करे? हैप्पीनेस को। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी में किस चीज को प्रमोट करे? प्लेजर को। डेफिनेशन का दूसरा एस्पेक्ट, दैट द पॉलिसीज which we are making, the policies which the company is making, the policies which the British government is making, or the policies which the government of India is making, the policies should be guided by a thought that whatever the policy we are making, all those policies should promote what? Happiness or pleasure in society. क्या ये पॉसिबल है कि आप पॉलिसी लाओगे तो 100 में 100 लोग खुश हो जाएंगे उस पॉलिसी से? नहीं। डिमोनेटाइजेशन लाओगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो जाएगी? जिसके पास कैश पैसा घर में पड़ा हुआ है। तो कोई भी पॉलिसी जो आएगी उससे कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? देखो, that write this highlight this point, that greatest number, हाँ इसको, ये वाला पॉइंट ज्यादा बेटर है। देखो, what utilitarianism says, देखो, this is the maxim of utilitarianism, this line, the greatest good for the greatest number. If you are making policy, what should be kept in our mind? पॉलिसी बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। सब लोग खुश नहीं होंगे डिमोनेटाइजेशन से, लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादा लोग गरीब है, वो पार्टी बनाएंगे, बहुत अच्छा हुआ, हमारे पास तो था ही नहीं, जिसका था उसका बर्बाद हो गया, राइट? ओके, सो द पॉलिसी शुड बी व्हाट? द पॉलिसी शुड इंश्योर व्हाट? द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। दिस इज यूटिलिटेरियन थॉट, दैट इट शुड इंश्योर द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। इट कैन बी सेड लाइक दिस ऑल्सो। ये भी पॉइंट है, लिखते रहना, ये सब इंपॉर्टेंट है इससे के लिए। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ people, the greatest amount of good for the greatest number of people, right? It means when we talk about utilitarian ethics, what does it aim? So it aim for the betterment of society as a whole, right? Utilitarianism is what? It is a reason based approach, and any approach that is reason based, reason means, okay, use of reason means scientific temperament, so it will be good, better, obviously. So it is a reason based approach to determine what is right and what is wrong. It is a reason based approach, okay? And many of the British administrators in India were inspired and motivated by this approach. कितना अच्छा विचार है, लेकिन there are some limitations of this thought. इस थॉट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस क्या है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक चाहे जितना अच्छा था, वो महात्मा गांधी थोड़ी ना था, वो सरदार भाई वल्लभ पटेल थोड़ी ना था, वो था तो अंग्रेज ही। मेरी बात समझ गया ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक कैसा एडमिनिस्ट्रेटर कि इंडिया में पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस के लिए होनी चाहिए। सो इफ बाय द ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी majority of Indian people will be happy, so dissatisfaction level will be lowered, और जब dissatisfaction कम होगा तो क्या होगा? Revolts and rebellions will be lowered. In this way the colonial presence can be maintained in an effective manner. है वो अमरीश पुरी, ठीक है, बस अमिताभ बच्चन वाला ड्रेस पहन के आ गया है। मेरी बात समझ गया ना? सो यही इस थियरी की लिमिटेशन है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटेरियन थॉट। क्लियर? दिस इज द लिमिटेशन, एंड दैट वी कैन look here, it has been written, देखो, first write some names, these names are important here, okay? Write some name of the utilitarian thinkers, okay? Jeremy Bentham, J.S. Mill, James Mill, David Ricardo, all are the important utilitarian thinkers or philosophers, right? Founders. Jeremy Bentham, J.S. Mill, John Stuart Mill is famously known as J.S. Mill, James Mill, David Ricardo, ठीक है? Now, these facts are important.
Jeremy Bentham, J.S. Mill, James Mill, David Ricardo. Now, the next point is, look here, the utilitarian ideas were to have a fundamental influence in molding the British attitude towards India. इसका मतलब क्या है कि पहले यूटिलिटेरियन थॉट बेस्ड अप्रोच नहीं था. So when utilitarian thought based approach will come, when the administrator will come, तो वो पहले वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स के आउटलुक और पॉलिसीज को थोड़ा सा क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, एंड इट विल व्हाट माउल्ड द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया. एग्जांपल इज व्हाट, लॉर्ड विलियम बेंटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और दोज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स व्हिच आर इनिशिएटेड बाय हिम ड्यूरिंग दिस पीरियड. 1828 से 35 वो इंडिया में था. और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, 1829. ओके, Custom of Sati Abolition Act introduced by Lord Bentinck. Bentinck ही लेके आया था. So he was the person who was inspired by the utilitarian thought and approach. Now, ये जो रैयतवाड़ी system in India है, this revenue system of administration, this model is also based on utilitarian approach. ठीक है? क्यों? क्योंकि मिडिल मैन को इसमें से क्या करना था, हटाना था. हालांकि ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, बट पर्पस क्या था, रैयत से डील करने का मतलब क्या है, मिडिल मैन को हटाना. और मिडिल मैन को हटाने से सिस्टम क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है. सो इट वाज आल्सो गाइडेड बाय यूटिलिटेरियन थॉट एंड बिलीफ. तो डेविड रिकार्डोज लॉ ऑफ रेंट पे बेस्ड है रैयतवाड़ी सिस्टम. तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट these ideas have fundamental influence in shaping the British attitudes towards India. Clear? They are important, right? Now, अब आगे देखते हैं. Company now was obliged to bring Christian missionaries on their ships and protect them according to the charter, 1813 charter. अब Christian missionaries India आने लगी by the charter of 1813, right? And what they did, Christian missionaries start their proselytizing activities and opened schools for the converted among the lower caste and taught them Bible along with other basic skills. ये अप्रोच क्या है, विच अप्रोच, इवेंजेलिकल्स. क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग पीपल. कन्वर्जन बंगाल में हो सकता है कि जंगल में हो सकता है, फॉरेस्ट ट्राइब्स के बीच में, फॉरेस्ट ट्राइब्स के बीच में, बिकॉज इन बंगाल द पीपल आर हिंदूज. क्लियर? हिंदू आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रांगली लोग, बट ट्राइबल कल्चर में क्या था, ठीक है, दे डोंट हैव अ रिलीजन, दे हैव सम कल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, दे फॉलो देयर ओन डेटीज, सबके डेटीज अलग अलग है, कुल देवता. It was easy to influence the tribal groups. So the missionaries will reach to the tribal groups. They can easily influence them. They can convert them. And once they are converted, there are Christian missionary schools to teach them. And what they will be taught? Bible. It means the same approach, evangelical approach we see here. Elementary education was highly decentralized, and education at all level existed outside the control of the state. Now, when Christian missionaries are opening schools, they are getting funds from Great Britain. ध्यान से समझना इस बात. It means company is not controlling this school. So the schools that are set up by the Christian missionaries, that network of schools are outside the control of the state. उनका खुद का अपना मैनेजमेंट है, खुद से वो स्कूल चला रहा है. तो Christian missionary schools that were set up by these missionaries were centralized or decentralized? They were decentralized. ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे खुले हुए थे, कंपनी से कोई लेना देना नहीं. Okay, they were autonomous, and many of the schools and colleges, Christian missionaries, they are today also autonomous. Autonomous है ज्यादातर schools और colleges को आप देखोगे. The missionary activity in education became another instance of a structural elaboration of the indigenous education system. ठीक है, यानी कि जो इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम था, इसका स्ट्रक्चरल एलेबरेशन. एंड व्हेन दे आर डूइंग दिस स्ट्रक्चरल एलेबरेशन, व्हाट दे आर डूइंग, they are promoting their culture. So this is evangelical approach. Obviously, it will promote dissatisfaction in the minds of Indian people. Orientalistic policy we all know. Yes. So when usually for the people including the required. So this will be the reason for the remote
Yeah. There were many reasons and it is also one of the reasons. ठीक है. The next chapter is revolts and rebellions. तो वहाँ ये point आएगा, फिर से आएगा. Got it? Now this Orientalist policy here, let's highlight some facts. We all know this. Orientalist policy simply means we know that the promotion of indigenous system of education. Indigenous system of education. It means Sanskrit education, Persian, Urdu, or we can say that research, okay, to promote ancient history, philosophy, okay. This all is known as act of Orientalism. Here what will be focused? Vernaculars. Okay? Vernaculars will be focused. This is known as act of Orientalism. Clear? And what we see that between this period 1757 to 1813, what is happening? Okay, the during the period of company, pro native education system policy. Here what we see? Pro native education system or policy. Why pro native education system or policy? It was an attempt to appease the Indian people. ठीक है, इससे इंडियंस खुश रहेंगे. It was an attempt to appease the Indian people. Indian people. Because the company was following which policy during this period? The company was following policy of non-intervention. तो जब आप पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन फॉलो कर रहे हो तो क्या करोगे आप? ओके, वहां पे प्रो नेटिव एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करोगे. And the facts which I have written here are most important facts for your exam. So write this. 1781, Calcutta Madrasa. Calcutta Madrasa. It was set up, right? Calcutta Madrasa, right? And then 1791, the foundation of Banaras Sanskrit College. So Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. These is what this is what an act of Orientalism. ठीक है? And who are the students in these colleges? Okay, so most of the students belong to elites of Hindu and Muslim religion. ठीक है, elites of Hindu and Muslim religion, and they obtained a higher post in the company. Higher post मतलब ऑफिसर नहीं बनेंगे, सबऑर्डिनेट ही रहेंगे. Got it? So if you read in these schools, Banaras Sanskrit College, Calcutta Madrasa, so you will get services in the company. कंपनी में आपको सर्विस मिलेगा. Got it? Now, apart from starting a few Sanskrit and Persian higher learning centers and restricting the activities of the missionaries, देखो ये भी पॉइंट है कि इस फेज में क्या किया गया है. लुक हियर, missionary activities have been restricted. Missionary activities को रोका गया है इस फेज में. Missionary activities were restricted. And why company was doing this? Company was doing to promote its own political interest. खुद के political interest को promote कर रही थी, कहीं हमारे presence को खतरा ना हो जाए. Got it? So the company was doing to promote its own political interest. The company did not spend any money on the education at the school level. ऐसा नहीं कि कोई फंड दिया हो. In this phase, the company did not provide any education grant and fund for the education. यही तो था फर्स्ट फेज 1757 to 1813. Now the idea is clear. अब अपने नोट्स में क्या क्या लिखोगे? 1757 to 1813. Write some key points. 1757 to 1813. आपको नोट्स बनाना भी सीखना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं. ठीक है ना? नहीं तो फिर बुक्स कलेक्ट करते रह जाओगे. तो what are the key points here? Right, point 1. Okay, Orientalism was promoted. Orientalism was promoted. Keywords निकाल के लिख लेना है नोट्स. Orientalism was promoted. Right, next point number 2. Pro-native education system policy was adopted. Pro-native education system and policy was adopted. Pro-native education system and policy was adopted. Right, next point. Okay, company followed policy of no intervention or non-intervention in the socio-religious affairs of Indians. Company followed the policy of non-intervention. Company followed the policy of non-intervention in the socio-religious affairs of the Indians. Policy of non-intervention followed here. Got it? Right, next point. Okay. Indian culture, Indian philosophy, and in Indian ancient traditions were Indian culture,
Indian philosophy, and Indian ancient history and traditions were explored. Okay, were explored. Example is what? Asiatic Society 1784. Again a prelims question, right? This Asiatic Society 1784. This is the example. Asiatic Society 1784. ब्रैकेट में लिख लेना विलियम जोन्स, कल मैंने बताया था विलियम जोन्स. और एक और पॉइंट लिख लेना, सपोर्टेड बाय whom? Warren Hastings, right? Supported by Warren Hastings. These are the prelims facts. Supported by Warren Hastings. Got it? Okay. Right. Next point. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 1781 कलकत्ता मदरसा. अगेन इट इज अ फैक्ट. 1781 कलकत्ता मदरसा. नाउ whenever you do self study क्या करना है? Pick important facts like this. Have a rough copy. जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ऐसे इंफॉर्मेशन को पिक करना है. मेरी बात समझ गया ना? और इससे क्या होगा? इन दिस वे यू विल स्टार्ट लर्निंग. ठीक है ना? राइट. सेकेंड पॉइंट 1791 संस्कृत कॉलेज इन बनारस. बनारस संस्कृत कॉलेज. बनारस संस्कृत कॉलेज. ओके. चलिए बनारस संस्कृत कॉलेज. अच्छा देखो एक पूजा यहाँ है. ठीक है. तो पूजा ने जैसे पूजा की क्लासेस खत्म हो चुकी है. So those students who have already completed their classes, not those who are doing classes somewhere. अभी जो लोग क्लास किसी कोचिंग में कर रहे हैं, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम उनके लिए नहीं होगा. रीजन क्या है? मुझे चाहिए वैसा स्टूडेंट जो सुबह से शाम तक फ्री हो सेल्फ स्टडी के लिए. गॉट इट? सो आई एम स्टार्टिंग दिस. क्लियर? सो दोज हु हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर कोचिंग क्लासेस, दे मे जॉइन इट. सो आई हैव प्लान दैट फ्रॉम 1st October आई विल गिव यू असाइनमेंट्स. ठीक है ना? कि विच चैप्टर्स इन एनसीईआरटी यू हैव टू रीड. क्लियर? व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर. और ऐसे क्या करना है? उस असाइनमेंट को फॉलो करना है. और उस असाइनमेंट को मेरे अकॉर्डिंग आपको कितने टाइम देने हैं? दिन में 3 hours. दिस मच. ठीक है. एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है ना? सारे सब्जेक्ट में बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन कैसे फिनिश करना है एक टाइम बाउंड मैनर में. ठीक है. तो यू विल डू इट. ठीक है ना? दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर कोचिंग क्लासेस. ठीक है ना? वो लोग करेंगे इसको तो ज्यादा बेनिफिट होगा. क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, क्लास करना भी जरूरी होता है तो हमारा वो सारा सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. तो वो नहीं करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्लासेस जरूरी है. ठीक है. ये अलग बात है कि फैशन चल गया आजकल. लोग सिलेक्ट होकर कहते हैं विदाउट कोचिंग. ऑनलाइन कोचिंग का मतलब क्या होता है? विदाउट कोचिंग. ठीक है. देखो कोचिंग करते सब है. ठीक है. ये है कि लोग शेयर नहीं करते हैं. आपने वो शेयर सुना है ना? है ना? कि अ, अ, एक क्या कहते हैं कि इश्क क्या है? तो एक आग का दरिया और डूब के जाना है. तो यूपीएससी की तैयारी भी उसी इश्क की तरह है. आग का दरिया है और डूब के जाना है. इस आग के दरिया को सभी वैसे ही डूब के पार करते हैं, वैसे ही स्ट्रगल करके निकलते हैं. मेरी बात समझ गया ना? तो थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना है. जैसे मान लो आप थोड़े से अलर्ट नहीं रहोगे तो अपने अटेम्प्ट्स को दे दिया आपने. कोई बच्चा अटेम्प्ट दे ही नहीं रहा है. 2-3 साल उसने तैयारी किया, ठीक से तैयारी की, और उसके बाद उसने कहा कि देखो मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया. ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट. ठीक है. हम अपना असेसमेंट कैसे करते हैं. चलिए. तो ये लिख लिया आपने. अच्छा इस फेज में एक और चीज हुई है ना, वो क्या है? क्रिश्चियन मिशनरीज वेर restricted. राइट. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्रिश्चियन मिशनरीज वेर restricted. Christian missionaries were restricted. Christian missionaries were restricted. Now you have some idea. Now we see 1813 Charter. 1813 Charter. What happens? Sum of 1 lakh rupees. That is education fund, education grant in India. That is also a PT question. 1813 Charter. Sum of 1 lakh rupees. Sum of 1 lakh rupees. 1813 Charter. ठीक है ना? And the fund was released in which year? अब ये कहानी आपको पता है. You all know this. That 1830 fund was announced. It was released in which year? 1823. So here what is the amount? 1 lakh rupees per annum. So how much amount will be released here? 10 lakh rupees. But this fund was not spent till which year? 1835. 1835 तक ये फंड खर्च नहीं किया जा सका. Why? Because a committee was formed here in 1823. A committee was formed. I have already discussed this with you. A committee was formed. Okay. And this committee was given a task that give recommendation on how to spend this fund.
how to spend this fund, or between the members of this committee there will be a debate, Anglicist or Orientalists debate. Orientalist will say that the medium of education should be vernacular, and Anglicist will be saying that this should be English. ये डिबेट होगा ना. अच्छा, जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा तो क्या एंग्लिसिस्ट एजेंडा को इवेंजेलिकल सपोर्ट है? यस और नो? यस और नो? यस, इवेंजेलिकल सपोर्ट टू द एंग्लिसिस्ट आइडिया. एंड व्हाट विल हैपन? पहले ही प्रेशर बनवा चुके थे वो. 1813 में तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भिजवा ही दिया. तो 1835 में जो मैकॉले की स्पीच होगी, क्या उस पे इवेंजेलिकल इन्फ्लुएंस होगा? यस. एंड मैकॉलेज मिनट, व्हाट मैकॉले सेज in his minute, in his famous speech in 1835, Lord Macaulay was the law member of India, and the controversy, for example, this is the time period. Here we see what? Anglicist, Orientalist controversy. The controversy ended in the year 1835, which famous Macaulay's Minute, speech of Macaulay. And now who was Macaulay here? So at this time, Macaulay was the law member of India. जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट बताऊंगा तो ये बताऊंगा. द फेमस मिनट्स फॉर मैकॉले और स्पीच ऑफ मैकॉले, दे सपोर्टेड व्हाट? तो देखो, द इंग्लिश एजुकेशन इन द इंडियन टेरिटरी. मैकॉले सपोर्टेड व्हाट? English education in the Indian territories. Macaulay said what? Again, I am highlighting here. What should be the objective of the education system? So the immediate objective of education system was to prepare a class of people who can occupy the subordinate positions in the colonial government and who could help in administering the natives. फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं मैं. What should be the basic objective or immediate objective of the education system? This English education system. English education system का objective क्या होना चाहिए? इसका objective होना चाहिए कि Indians का एक ऐसा class तैयार किया जाए to prepare a class of Indian people who can occupy the subordinate position in the colonial government. जो कि colonial government में क्या कर सके? एक subordinate position, subordinate job उनको मिल सके. वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे, उसके क्या बनेंगे? असिस्टेंट बनेंगे. मेरी बात समझ गया ना? सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स इन द colonial government, and they will help in administering the natives. It means British are administering. Those educated Indians will be the subordinate of these Britishers, and they will help, okay, to administer or rule Indian people. This was the basic purpose. ठीक है? Now, in the long run, what is the basic objective? So in the long run, this education will do what? This education in the long run will do what? Highlight this point. It will westernize the elites, elite class of India. क्या हो जाएगा? Westernize. और जब elite class westernize हो जाएगा तो हम फॉलो किसको करते हैं? बताओ. आप लोग ड्रेस वगैरह खरीदने जाते हो तो देखते हो सलमान खान ने नया जैकेट पहना है, ऐसा ही खरीदना है. आलिया भट्ट ने ये वाला कपड़ा पहना है, यही वाला ड्रेस चाहिए. रणबीर कपूर ने ये पहना है. हम फॉलो किसको करते हैं? ठीक है. वो गुजरात के दूल्हे को भी थोड़ा फॉलो कर लेना. ठीक है. Okay. Now, in the long run, the education system is meant for what? It is meant for westernizing the elite, who in turn will influence the masses to facilitate the conversion of India into the market to consume industrial products of Europe and supply the industries based in Britain with the raw material. This idea is very much important. That if Indians will be educated, if Indian people, elite class of Indian people will be westernized, what will happen? The other Indians will follow this. And when they all will follow Western culture, so what will happen? Your cultural needs will be changed. Your consumer needs will be changed. Now you will need what? British made goods, European products. Okay? And this will do what? This will anglicize the Indians. Indians will, by blood they will be Indians, but by look, by appearance, by their consumer behavior and sentiment, they will be the British. और ये टारगेट सिर्फ इंग्लिश एलीट क्लास नहीं था, प्रिंसली स्टेट, लोकल रूलर एंड द नोबिलिटी क्लास. ठीक है. उनको क्या किया? उनका ड्रेस अलग ही होता था, पता ही है आपको. ठीक है. राजस्थान वालों को पता ही है, प्रिंसली स्टेट एकदम. ठीक है. हाँ, तो उनके पास क्या चला जाएगा? सूट बूट चला जाएगा.
और इंग्लिश वाली मैडम पहुंच जाएंगे उनके घर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। अब उनके बच्चे इंग्लिश बोलने लगेंगे, बाकी लोगों के बच्चे टेंशन में कि हमारे बच्चों को तो इंग्लिश बोलना आ नहीं रहा है, फिर क्या होगा, राइट? So this is what, okay, an idea that once elite will be westernized, so its influence can be easily seen on the subordinate people, and this approach is termed in the literature of education history as downward filtration theory. इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहते हैं कि मेरे यहाँ अगर इंग्लिश वाली मैडम आके मेरे बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हैं तो मेरा पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, उसका बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश वाली मैडम उसके यहाँ भी आएंगी। तो इंग्लिश वाली मैडम का जलवा तभी से बना हुआ है, कॉलोनियल पीरियड से, ठीक है, अभी भी है भाई, ठीक है। चलिए, सो दिस एक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। अब देखो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को अगर हम और बेहतर ढंग से समझें, सो व्हाट आर द रीजन फॉर एडॉप्टिंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन फॉर एडॉप्टिंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी? सो द रीजन नंबर 1 इज व्हाट, the British rulers needed educated employees to run the commerce as well as administration. Trade and commerce के लिए और administration के लिए they needed what? Educated employees उनको चाहिए। ब्रिटेन तो छोटा सा देश है, इतनी पॉपुलेशन थोड़ी न थी, बट मुट्ठी भर लोग आके handful of British people came and they were ruling over India, but now they need assistance. आपके पास पैसा है, आप एक शोरूम खोल लोगे तो आपको एम्प्लॉय तो चाहिए ना, तो उनको वही चीज़ है, कंपनी के सीईओ वो हैं और उनको एम्प्लॉयज चाहिए, और एम्प्लॉयज कैसे चाहिए? इंडियन एम्प्लॉयज चाहिए, इतनी सी बात है, राइट? दिस इज द मेन पर्पस, and in administration also they need Indian people to help and support them, and that's why it was important, okay, to teach Indian people English. देखो खुद ही सीख लिए होते हिंदी या वर्नाक्यूलर, ठीक है, मुट्ठी भर लोग थे, उन्होंने वर्नाक्यूलर नहीं सीखा, हिंदी नहीं सीखा, पूरे हिंदुस्तान को क्या सिखा दी? अंग्रेजी सिखा दी। ये होता है वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंस, गॉट इट? दिस दे डिड। नाउ द गवर्नमेंट डिड नॉट रिसीव sufficient fund for educating the masses. This is also an important point. Downward filtration means the education centers will be opened in the metropolis, most important cities, okay? The elite class children will get the opportunity to read in those schools and colleges, and it was expected that gradually the benefit of this education will percolate to the masses. It means in downward filtration theory, what is neglected? Mass education is neglected, ठीक है, मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया। क्यों नेग्लेक्ट किया गया? इसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि गवर्नमेंट मास एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फंड भी नहीं दे रही थी, तो पैसा आपके पास कम है, कम पैसा कहाँ खर्च करोगे, ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? जैसे अगर मान लो 1 लाख रुपए आपके पास, तो आप किसी एक आदमी को दे दोगे तो उसकी हेल्प ठीक ठाक हो जाएगी, 2 लोगों को दे सकते हो। अगर आपने 1 लाख लोगों को 1-1 रुपए दे दिए तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सब मिल के पीट देंगे आपको कि भीख दे रहे हो, राइट? Okay, so this is the same thing, the fund is very limited and now there is no any option, so the government thought that we should promote education among the elite class, ठीक है, और धीरे धीरे इसका बेनिफिट मिल जाएगा मास लेवल पे। So that's why this policy was adopted, because the government did not receive sufficient fund for education of the masses. So if they don't have education of the fund for the education of the masses, so they will promote education for the elite, because this class is very limited in number, okay? Now the third point is the educated people, okay, educated on British lines through English medium would get higher position in government services, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को क्या होगा? गवर्नमेंट सर्विसेज में दे विल गेट हायर पोजीशन, और हिंदी मीडियम वाले, पता चले इंग्लिश मीडियम वाला ऑफिसर है, हिंदी मीडियम वाला गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो हिंदी मीडियम वाला अपने बच्चे को किस मीडियम में पढ़ाएगा? इंग्लिश मीडियम में। सिंपल सा फंडा है, इसमें क्या गड़बड़ है? इंग्लिश मीडियम का रेशियो बढ़ता जा रहा है यूपीएससी एग्जाम में, हिंदी मीडियम का कम होता जा रहा है, तो कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा अपने बच्चे को दोबारा हिंदी मीडियम में थोड़ी ना पढ़ाएगा वो, नहीं, राइट? So the same will happen here also, right? The educated people educated on British lines through English medium would get higher posts in the government services, and in return they would use their influence in controlling the masses from going against the government rule. है इंडियन ही, RRR मूवी में देखो, हालांकि वो इंडियन है सही मायने में, बाद में पता चलता है RRR का एक हीरो क्या करता है, ही इज वर्किंग विद ब्रिटिश, शुरू में क्या लगता है कि ही इज सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग ब्रिटिश,
सो द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड दोज काइंड ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, कि जो इंडियन हो और इंडियन को सप्रेस करने में किसकी मदद करें, ब्रिटिश की मदद करें. दिस वाज द बेसिक पर्पस ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम. आफ्टर एजुकेटिंग सम पीपल, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स यू आर एजुकेटिंग सम पीपल, कुछ लोगों को एजुकेट कर रहे हो, एंड दीज पीपल आर एट द टॉप लेवल, दे आर इलीट्स. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग द masses, it means bottom level mass education, okay, will be completed. So this class will have the burden to educate this class. So the priority is top, not bottom. The priority is elite class, the priority is not mass education. So this approach is what, top down approach. ये top down approach. And what is bottoms up strategy? जब आपका फोकस कहाँ होता है, मास लेवल, ग्राउंड लेवल. बॉटम, दैट इज व्हाट, बॉटम्स अप स्ट्रेटजी, एंड दिस इज व्हाट, टॉप डाउन अप्रोच. ये एजुकेशन का कैसा अप्रोच हो गया, कौन सा मॉडल हो गया, दिस इज टॉप डाउन अप्रोच. गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी डिसाइडेड टू स्पेंड द मनी फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना था. In 1837, the English language became the official language. Very important point. In 1813, write this. The English language became official language. English language became official language. Okay? And now, soon a demand for English education was created by throwing open the subordinate position in government of the native in 1844. इसका मतलब क्या है? English became the official language and the government has announced its policy that in company service, all the subordinate positions will be given to those people only who are knowing English. तो demand for English education will be promoted. जब ये पॉलिसी ही आ जाए तो सब लोग क्या करेंगे, बताओ, क्या पढ़ना शुरू कर देंगे, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे. तो ये भी एक तरीका है. ओके, if the government will announce that all the subordinate positions will be given to those people who know English, obviously the westernization and the English language will be promoted as a result. And this policy attracted the native ruling class towards English educated institution. Got it? Apart from a lot of public discussions, both in India and homeland means Britain, regarding the approach of the company, there was no significant physical investment by the company on educational matters. यानी कंपनी सिर्फ हो हल्ला मचा रही थी, फंड दे ही नहीं रही थी जो फंड रिक्वायर्ड. दे वर टॉकिंग एजुकेशन, डिस्कसिंग एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट एजुकेशन नहीं दे रहे थे. जैसे आजकल यूट्यूब वीडियोस में होता है, मैं तो कपिल शर्मा शो भी देखता हूँ और कुछ और शो देखता हूँ, ठीक है, जिसमें यूपीएससी की क्लास में यूपीएससी की बात छोड़ के बाकी सारी बात हो जाती है और क्लास भी खत्म हो जाता है. तो अंग्रेज ऐसे ही थे, राइट. दे वर डिस्कसिंग एजुकेशन पॉलिसी, टॉकिंग अबाउट एजुकेशन पॉलिसी, approaches of education policy, but they were not giving any sufficient fund for the promotion of education in India. केवल शोर शराबा, केवल हो हल्ला, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं. जिससे अच्छा शोर शराबा होगा तो लोगों को क्या पता चलेगा, हाँ कुछ तो काम हो रहा है एजुकेशन पे. ठीक है, पैसा दोगे तब काम होगा ना, वो हो ही नहीं रहा था. नाउ दे डिड नॉट बोदर अबाउट द लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन. क्लियर, दे डिड नॉट बोदर अबाउट द लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन. These facts, ये तो आपको पता ही है. कलकत्ता मदरसा established by Warren Hastings year is 1781. What was the purpose? Study of Muslim law and related subjects. This is what, Orientalism or Anglicism. देखो यहाँ पे आ गया ना, this is what, Orientalism. कितना सिंपल है. संस्कृत कॉलेज established by Jonathan Duncan. ये प्रीलिम्स का फैक्ट है. Jonathan Duncan was what? Resident at Banaras. Resident पता है ना? Resident क्या होता है? British officer in the court of a local ruler. So he was a resident at Banaras in 1789. And why this Sanskrit college was established? So it was established for the study of Hindu law and philosophy. Got it? What is the third point? Fort William College. It was set up by Wellesley. Year is what? 1800. और वेलेस्ली कब आया था? 1798 to 1805. यही टाइम पीरियड था ना. So Fort William College was set up by Wellesley in 1800, and what was the purpose? Training of civil servant of the company in language and customs of Indians. ये भी बड़ा मजेदार कहानी है. बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद करके
इंग्लैंड शिफ्ट कर ले गए। क्यों शिफ्ट कर ले गए, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। फोर्ट विलियम कंपनी बिल्कुल आज के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह था। मसूरी, कुछ लोग मसूरी जाते हैं तो एकेडमी देख के आते हैं, अच्छा यही मुझे आना है, और 2 साल बाद पहुंच जाते हैं, इतना तगड़ा उनका कमिटमेंट होता है। अब यहाँ क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ ट्रेनिंग किसको मिल रही है, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। अब फोर्ट विलियम कॉलेज अगर खुल जाएगा तो क्या होगा, कलकत्ता में लोग पूछेंगे भाई ये काहे का कॉलेज है, ये किस लिए कॉलेज है, तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है। ये सिविल सर्वेंट क्या होता है, फिर पूछेंगे ये इंडियन बन पाएगा कि नहीं, तो आंसर होगा नहीं, इंडियन नहीं बन पाते, केवल ब्रिटिश ही बनते हैं। भाई ये तो गलत बात है, इंडियंस को भी बनना चाहिए, आखिर इंडियंस क्यों नहीं बनते हैं। दिस विल रेज व्हाट क्वेश्चंस इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल, दैट हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। और जब इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इंडिया इज सबऑर्डिनेटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। यही तो समझदारी नहीं थी इंडियन पीपल को, कि भाई हमारा हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, उनको ये पता ही नहीं चल रहा था, समझाना पड़ा था उनको। तो फोर्ट विलियम कॉलेज क्या कर रहा था, लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ा रहा था। बाद में गवर्नमेंट ने कहा यार बड़ा खतरा हो जाएगा, बंद करो इस कॉलेज को, ठीक है। तो ब्रिटिश वर वेरी स्मार्ट, okay, they will never allow to promote sense of national feelings and sentiments in the mind of Indian people. Now the next point is what, okay, देखो 1813 charter there was a clause, okay, and according to that clause, this point I have already discussed with you, that 1 lakh rupees were given as the fund for education, grant for the education, and along with it Christian missionaries were also allowed to come to India. Got it? This is the point here. This was an educational grant. And here, Calcutta College was set up in 1817. अच्छा देखो, Calcutta College was set up in 1817 by whom? Educated Bengalis. गवर्नमेंट ने फंड किया, फंड खर्चा नहीं हुआ, कलकत्ता कॉलेज को सेटअप कौन कर रहा है, एजुकेटेड बंगालीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इम्पार्ट्स इंग्लिश एजुकेशन इन वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। ध्यान से समझना इस बात को, इंग्लिश एजुकेटेड बंगालीज आर ओपनिंग कलकत्ता कॉलेज। और यहाँ पे जो एजुकेशन है ये कैसा एजुकेशन है, सेकुलर एजुकेशन, विथ बाइबल और विदाउट बाइबल, विथ बाइबल और विदाउट बाइबल, विदाउट बाइबल। और क्या कह रहे थे इवेंजेलिकल्स, दैट सेकुलर एजुकेशन विदाउट बाइबल इज वेरी मच डेंजरस, ठीक है। तो ये खतरा था, और बंगाल के लोगों से यही खतरा था, यहीं से खतरा शुरू है। 1905 में मुद्दा आएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। Bengal was the epicenter for the intellectual revival of that phase. Okay, the government also set up 3 Sanskrit colleges at Calcutta, Delhi, and Agra. All these are the acts of Orientalism. Indian लोगों को अपीस करके कैसे रखा जाए, this was the objective. Now, this is the name of the committee, General Committee of Public Instruction. ये कौन सी कमिटी थी, वही कमिटी 1813 to 1835. A committee was formed to discuss how to spend this money. उसी कमेटी का नाम क्या है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। और क्या होगा, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में द मेंबर्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 and group 2. Group 1 will support Orientalism and group 2 will support what, Anglicism. Members of the committee will be divided into 2 groups. Group A will support Orientalism and group B will support Anglicism. Got it? The controversy ended in 1835 by famous Macaulay's Minute. Macaulay's Minute. Got it? Macaulay said that English system of education will be provided, and here a theory will come that is called downward filtration theory. Downward filtration theory. Got it? Next, Persian was abolished as the court language and English became the court language. ये क्या हो गया, Macaulay's reflection, कि previously Macaulay's Minute Persian was the court language, अब क्या हो गया, English was the court language. This shows that now the policy has been changed. Printings of English books were made free and available at very low price. English education was allotted more funds as compared to the Oriental learning. और English को कैसे promote कर सकते हो, ठीक है, प्रिंटिंग को क्या कर दो, फ्री कर दो, ओके, या प्रिंटिंग बहुत लो लेवल पे हो,
If you are printing English content, it will be at a very low price. Or agar if you are printing vernacular content or Hindi language, it will be at very high price. So what will be promoted? English will be promoted. नौकरी भी किसको मिल रही है? जिसको English आ रही है. So what will be promoted? English will be promoted. Now in 1849, J.E.D. Bethune founded Bethune School. What is the complete name of J.E.D. Bethune? बताया था क्लास में. D for drink water. John Eliot drink water. Right? Founded Bethune. Bethune School. Ishwar Chand Vidyasagar. याद आया? I have already discussed with you this concept. Okay. Now, Pusa Engineering College was established at Roorkee. Now 1835, 36, 1838, William Adams' report on vernacular education in Bengal and Bihar pointed out defects in the system of vernacular education. Clear? These are the important developments. But ये exam में नहीं पूछा जाता. William Adams' report ये नहीं पूछा जाता. Right? So now you are familiar with all these developments. Now we are moving ahead. Okay. Now in the company rule, there are again some important points here. Okay. 1843 to 55, this is an administrator's effort, individual effort. James Jonathan, this is not important for example. Experiments in Northwest province, what he did? He opened one government school as a model school in each tehsil and a normal school for teachers training for vernacular schools. It means at individual level, an administrator is doing what? He is doing some experiment. And what is the experiment? In Northwest provinces, what he is doing? He has opened one government school as a model school in each tehsil, and he has also set up teachers training school. इसका मतलब कुछ कुछ यहाँ पे इफेक्ट अब हमें देखने को मिलने लगा है किस चीज का? यूटिलिटेरियन थॉट्स एंड अप्रोचेस का. द गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर डूइंग व्हाट? एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कैसा जाएगा? दिस दे आर डूइंग. नाउ 1853, in a famous minute means speech, Lord Dalhousie expressed a strong opinion in favor of vernacular language. याद रखना. Lord Dalhousie is known for development of physical infrastructure. Lord Dalhousie is also known for doctrine of lapse, and Lord Dalhousie is also favoring or supporting what? Vernacular system of education. Now this is important for exam. Highlight this. Woods Dispatch 1854. Write this. Prelims. Important for prelims. Woods Dispatch 1854. Write point 1. इसको simple way में लिख लो. Point 1. Right. Woods Dispatch 1854. Write this. Point 1. Right. The report says that the British Indian government. The report says that. अभी अच्छा यहाँ पे British Indian government है कि company government है? 1854 में company government. Got it? So read this. The report says that the company government must take the responsibility. The company government must take the responsibility to promote education of the masses. Must take responsibility to promote education of the masses. To promote education of the masses. Right? It cannot be delayed and ignored. Okay. Now it cannot be delayed or ignored now. यानी ये किस स्ट्रेटजी की बात कर रहा है? बॉटम्स अप स्ट्रेटजी. इट कैन नॉट बी डिलेड और इग्नोर्ड नाउ. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? टिल नाउ द गवर्नमेंट हैज डन व्हाट? द गवर्नमेंट हैज डिलेड द एजुकेशन ऑफ द masses. फोकस कहाँ था? elite class education. What Woods Dispatch is saying? That you cannot delay it further. Now you will have to focus on the education of the masses. So can we say that the Woods Dispatch is asking to, okay, reverse the policies of downward filtration theory? Top down से bottoms up strategy होनी चाहिए. Yes, but will it happen in its true sense? No. ये सब क्या हो रहा है? हो हल्ला हो रहा है, पेपर पेपर खेल रहे हैं, जिससे आपको पता चले वाह 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 गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी अच्छी है. राइट? सो राइट, सेकंड पॉइंट. राइट, इट मीन्स दैट it is asking to reverse the previous theory. It means that it is asking to reverse the previous theory. To reverse the previous theory. To reverse the previous theory. Okay? At least on paper. कम से कम पेपर पे ही हो.
at least on paper. To reverse the previous theory, at least on paper. It is asking to reverse the previous theory, at least on paper. Got it? Now, with the help of us, you will draw a sketch to explain it. देखो, downward filtration theory. Draw a sketch here. एक sketch draw करिए simple. Okay. Downward filtration theory. ऐसे लिख लो. And write this top down approach. ये क्या था? Top down approach और model. Downward filtration theory क्या था? Top down approach or model. This is elite and this is mass education. Elite education or mass education. So what is focused according to downward filtration theory? Elite education. It was a elitist based approach or top down model. It was a elitist based approach or top down model. Got it? Now write this part. Second part. Second part is what? Right? Okay. Wood's dispatch. Wood's dispatch. Wood's dispatch क्या है? Draw this structure. Write this bottoms up strategy. Bottoms up strategy. Bottoms up strategy पे. It means यहाँ पे क्या होगा? Let this focus on the education of masses. Focus on the education of the masses. Topic के essence को समझो तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना? याद आएगा एग्जाम में. Focus on the education of the masses. ठीक है? ओके. अब एजुकेशन ऑफ मास कैसे होगा? आप सोचो. पहले अगर मान लो सपोज I am living in a village, okay, and there is a primary school in my village, but the secondary school is situated 540 kilometers away from my village. So what is the possibility कि मैं प्राइमरी एजुकेशन से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? ध्यान से समझना इस बात को. एंड सपोज वहां तक मैं पहुंच भी गया एंड द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आर सेटअप 2000 किलोमीटर्स अवे, तो मुझे एजुकेशन मिल पाएगा? नहीं. सो व्हाट शुड बी द मेथड हियर? दैट इन विलेजेस देयर शुड बी प्राइमरी स्कूल्स, then at block level there should be secondary and senior secondary schools, district there should be senior and senior secondary schools. ठीक है? It means that the schools network should be developed. Got it? At the village level, tehsil level, district level, network of primary schools, secondary schools, senior secondary schools should be developed and they should be connected with the college and the universities. जब तक आप ये लिंक नहीं करोगे तब तक आप एजुकेशन ऑफ द मासेज को प्रमोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इलीट क्लास है वो रहता है मेट्रो सिटीज में, उसके बच्चे को स्कूल भी मिल गया, कॉलेज भी मिल गया, यूनिवर्सिटी भी मिल गई. आप दिल्ली में रहते हो, आपको स्कूल भी मिल गया, कॉलेज भी मिल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिल गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब भी मिल गई. गाँव के बच्चे का स्ट्रगल सोचो कि कोई उड़ीसा के किसी गाँव में रहता है, ठीक है, पता चला वहाँ स्कूल भी नहीं है, स्कूल जाने के लिए उसको नदी पार करके जाना पड़ता है. मेरी बात समझ गया ना? सो दिस इज द अप्रोच ऑफ वुड्स डिस्पैच. इनकी पॉलिसीज इतनी शानदार थी, हालांकि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट थोड़ा वीकर था, ये भी मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, ठीक है. कई जगह तो ऐसा लगता है कि इतने स्मार्ट थे, इंडियन एजुकेशन सर्विस भी बनाया था ब्रिटिश ने. मेरी बात समझ गया ना? पॉलिसीज वेर वेरी मच एक्सीलेंट, ठीक है. यस, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है. तो वुड्स डिस्पैच में क्या है? ठीक है, write this point that a network of what's dispatch, a network of schools, primary school and network of schools and colleges. पहले ये लिख लो, network of schools and colleges, network of schools and colleges should be set up, network of schools and colleges should be set up. और एक अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिख लो कि कनेक्ट कर लो ऐसे, प्राइमरी स्कूल कनेक्ट विथ सेकेंडरी, देन कनेक्ट विथ सीनियर सेकेंडरी, then connect it with college. Structure draw कर लो. Primary school connect with secondary school, then connect with senior secondary school, then connect it with college, then connect it with universities. So this is what a proper network of educational institutions. This is what Woods dispatch is saying. कि क्या होना चाहिए? A proper network of educational institutions. Is it good or not? Yes. Woods dispatch is also saying that, have you drawn this structure? Primary, secondary, senior secondary. देखो, what it is saying, write this. At school level, vernacular should be the medium of instruction. Write this. At school level, vernaculars should be the medium of instruction. At school level,
vernacular should be the medium of instruction. And right, okay, school level vernaculars. Right, next point. And higher studies, higher studies, higher studies, English should be the medium of instruction. At school level, vernacular should be the medium of instruction. And at higher studies, English should be the medium of instruction. Higher studies में medium of instruction क्या होना चाहिए? English होना चाहिए. Okay. Write one more point. Okay. Focus on female education. Focus on, next point. Focus on female education. Focus on female education. Next point. Focus on vocational education. Focus on vocational education. Right, next point. Focus on teachers training. Focus on teachers training. Focus on teachers training. Right, next point. Okay. Right, next point. In government-led institutions, the nature of education should be secular. In government-led education, in government-led educational institutes, in government-led educational institutes, the nature of education should be secular. The nature of education should be secular in government-led education system. The nature of education should be secular. Right, next point. Next point is, okay, right, the private enterprises or the private individuals should also be encouraged. Private enterprises or private individuals should also be encouraged, or private enterprises or private individuals should also be encouraged, or should be given grants in aid, should also be encouraged, or should also be given grants in aid, okay, to set up educational institutions, okay, to set up educational institutions. They should also be given grants in aid to set up educational institutions. Suppose you are a private individual, okay, and you want to donate your building for setting up of schools and colleges. So you can gain some government fund also. In this way, schools and colleges should also be set up. Now tell me, Wood's Dispatch, it is more progressive in its outlook or not? Yes or no? हाँ, more progressive है. पहले की जो weaknesses थी उसको दूर किया गया है इसमें. At least on paper. अब रटना है आपको कि आसानी से याद रहेगा. You can easily remember that किस पॉलिसी को रिवर्स करना है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. Instead of focus on education of the elite, कहाँ focus करना है? Education of the masses. For that, what is needed? Network of schools and colleges. Clear? प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सबको क्या करना है? कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ. गॉट इट? टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, all this should be done. And write one more point, right? By the recommendations of Wood's Dispatch, 3 universities were set up in the year 1857. This is also very important fact for Philips. By the recommendations of Wood's Dispatch, 3 universities were set up in the year 1857, and these are Calcutta, Bombay, and Madras. Calcutta, Bombay, and Madras. Calcutta, Bombay, and Madras. 3 universities were set up. This is the outcome. Write one more point, that in every province, Department of Education was also set up. In provinces, Department of Education was also set up. In provinces, Department of Education was also set up. In provinces, Department of Education was also set up. Got it? In provinces, Department of Education was also set up. Right? Question number 1. Question number 1. Discuss. The development of education policy during company rule in India. Discuss the development of education policy during company rule in India.
discuss the education of discuss the development of education policy during company rule in India. Can you write the answer of this question? 150 words. हम minimum words में लिखेंगे 150 words. We have to practice. Clear? Right. Next question. Next question is right. The year 1813. The year 1813 marks. The year 1813 marks is marked as an important year. The year 1813 is marked as an important year. Is marked as an important year. Okay. With respect to the with respect to the development of with respect to the development of system of education during with respect to the development of system of education during the company rule in India. With respect to the okay development of system of education during company rule in India, discuss 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 लिख लोगे. Right. Next question. Right. Okay. Right. Define downward filtration theory. Define downward filtration theory and the main reasons behind introduction of this theory. Define downward filtration theory and the main reasons behind the introduction of this theory. Introduction of this theory. Okay. With respect to the system of education during with respect to the system of education during company rule in India. During company rule in India. During company rule in India. Got it? With respect to the system of education during company rule in India. Clear? You can write the answers very easily. लिख सकते हो. And you will find that the content is similar. What you have to do? You have to modify a little bit while writing the answer. ठीक है ना? 150 words you will try to write the answer. Now, the second important part we are going to enter, and that is, okay, development of education during the Crown rule in India. So write second point, development of education during Crown rule in India. Development of education during Crown rule in India. Again, there are so many questions that are important for prelims exam, mains exam. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, टाइम हमने ज्यादा लिया बट ऐसा नहीं लगा कि थीम को व्हेन यू अंडरस्टैंड द थीम इन अ होलिस्टिक मैनर, ओके, you can write excellent answer in the beginning phase itself. You don't need trial and error. लोग कहते हैं गलती से सीखना चाहिए इंसान को. गलती करें क्यों जानबूझ के? पहले ही ठीक से पढ़ो, पता चले गलत आंसर लिखोगे, फिर टीचर सुधार करेगा, फिर सुधार करेगा. तो पहले ही ठीक से पढ़ के जाओ और अच्छा आंसर लिख दो. ठीक है. दिस इज द जनरल आइडिया. Now we have to discuss about the development of education during the Crown rule in India. I have already discussed the development outline that Crown rule की बात कर रहे हैं. So here we are going to discuss the events after 1858. Here we are going to discuss about the events after 1858. And whenever you get any such question, draw the sketch. The say if the question is discuss the system of education during the company rule, तो मेन बॉडी में क्या करना है? एक स्केच ड्रॉ करना है. ठीक है ना? इस स्केच ड्रॉ करने से एग्जामिनर विल गेट एन आइडिया कि यू नो अबाउट द ऑल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट डेवलपमेंट इन दिस स्केच? पहला डेवलपमेंट क्या होगा बताओ? अभी बताया था, हंटर एजुकेशन कमीशन. दिस इज द फर्स्ट डेवलपमेंट, हंटर एजुकेशन कमीशन. पहले स्केच ड्रॉ कर लो. 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83. We will discuss the topics like this. ठीक है. Then Indian University Raleigh Commission लिख सकते हो. Raleigh Commission 1902, or this is also known as Indian University Commission 1902.
और recommendations are known as Indian University Act 1904. ऐसे sketch making will make your answer more effective. Raleigh Commission 1902. This is also known as Indian Universities Commission 1902. And the act we see in which year? 1904. So this is Indian University Act. Got it? This is Indian University Act. अगला important development क्या हो जाएगा? Sadler Commission. Sadler Commission 1970. Sadler Commission 1970. जितने टॉपिक बता रहा हूँ सारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ऑल दीज आर द प्रीलिम्स क्वेश्चन. ठीक है. अगला डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? राइट. एजुकेशन according to Act of 1990. Education system according to the Act of 1990. Education system according to the Act of 1990. Then the next will be what? Hartog Committee that I discussed with you. It was an auxiliary committee of Simon Commission. Hartog Committee 1929. Hartog Committee क्या है? This is an auxiliary committee of Simon Commission. Simon Commission बना था 1927 में. Okay, so it was an auxiliary committee of Simon Commission. Hartog Committee 1929. Then the next will be Sargent Plan of Education 1944. Sargent Plan of Education. Sargent Plan of Education 1944. Clear? Suppose you have to write the answer of this question, that development of education during crown rule और 150 वर्ड हो, तो क्या हम सारे में सारे डायमेंशंस लिख सकते हैं क्या? नहीं. First we will draw an outline and then we can write only some most important points in our answer. तो हमारे एग्जाम में स्कोप क्या है? केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने का. So when I will be discussing the themes with the slide, I will dictate the most important points only and you will write that only in your notes. ठीक है ना? That we have to do. So the first topic here is Hunter Commission. So we are going to discuss Hunter Commission first. That what are the important recommendations of Hunter Commission. So let's look here about this Hunter Commission. So what we see that Hunter Commission, okay, Hunter Commission, what is the year? 1882. ठीक है. इसके पहले क्या था? तो इसके पहले क्या था? Woods Dispatch. What is the year? 1854. Hunter Commission, what is the year? 1882. तो पहला पॉइंट बहुत स्मार्टली हम लिख सकते हैं कि Hunter Commission was set up to review the system of education that was previously suggested by Woods Dispatch 1854 and give further recommendations. कितना आसान पॉइंट है हिस्ट्री में. एक टॉपिक को पुराने टॉपिक से क्या करना है? रिलेट करना है. दिस यू हैव टू डू. सो हंटर कमीशन, ओके, डिड व्हाट? इट कंडक्टेड अ थॉरो इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी ऑन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया. और प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोमोट हुआ था किसके सजेशन पे? वुड्स डिस्पैच. बताया था ना. तो ये क्या कर रहा है? रिकमेंडिंग व्हाट? ओके, it is doing what? An inquiry, investigation on what? On the condition of primary and secondary education, and it was developed on the basis of Woods Dispatch. And based on the findings of its inquiry, the commission made valuable recommendations to improve the condition of primary and secondary education. तो हमेशा याद रखो, वुड्स डिस्पैच इसके पहले है, 1854 is the year, and हंटर कमीशन 1882 is the year. और इसका जो मेन रिकमेंडेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे करे इस पे है. और वुड्स डिस्पैच ने क्या बताया था कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारा जरूरी है. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उसी को एड्रेस करेगा हंटर कमीशन. प्लस इट विल गिव some more recommendations also. Now the very first point, okay, what we see here is that 1857 revolt, we all are familiar with this. And after this revolt, what will happen? The administration will be transferred from company to crown. So in 1858 there is an important change. Now company was not the ruler. Now who was the ruler? Crown was the ruler. It means that now India came under direct British rule. Clear? And the policy will be changed. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. I hope I have already discussed with you.
1757 to 1813, what was the policy? Policy of non-intervention. इसके बाद 1813 to 1858, what was the policy? Policy of cautious intervention. Policy of cautious intervention. ठीक है? Cautious intervention. Now the policy will be changed here. Now the main policy here is non-intervention or neutrality in the matter of socio-religious affairs, but the government will now try to appease different group of Indians in India. 1857 was a revolt, and now the purpose was to minimize the level of dissatisfaction among the Indian people. तो लोग किन किन बातों से नाराज थे, इनकी एक लिस्ट बनाओ और उसके बाद क्या करो? ट्राई टू अपीज इंडियन पीपल so that the events like the revolt of 1857 could not be repeated in the near future. ठीक है? क्या लोग इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से नाराज थे? यस. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी वाले अप्रोच से नाराज थे? यस. वुड्स डिस्पैच से रिकमेंडेशंस they were implemented or ground level, all those recommendations were on paper only. Paper only. Clear? So now the British government will make a list of all those challenges. Okay. And what about the missionaries? Now this time the British government will say that due to the interference of Christian missionaries, many Orthodox Hindus are angry. Tribals are also dissatisfied by the interference of Christian missionaries. Now the government will say that after 1858 we will follow policy of non-intervention. Policy of non-intervention means the government will follow a policy of religious neutrality. ठीक है? So that Orthodox Indians could be appeased. So the government will follow policy of religious neutrality and started an agitation and formed the General Council of Education in India in London. General Council of Education for India, basically for India in London. Now the General Council of Education requested Lord Ripon. Lord Ripon was the Viceroy of India. Lord Ripon अच्छा वाला Viceroy था, अमरीश पुरी नहीं था. Now it asked the Ripon to do an inquiry and investigation on the system of Indian education. Now Lord Ripon appointed a commission that is known as Indian Education Commission on 3rd Feb 1882, and William Hunter was the chairman. So therefore this is known as Hunter Commission. यहाँ पे क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्या हो सकता है? Who appointed Hunter Commission? So the answer will be Lord Ripon. तो कहानी क्या? What is the story? 1858 के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है. The policy of non-intervention in the socio-religious affairs. Plus the government has also realized that due to the interference of Christian missionaries, Orthodox Hindus are not happy. So the government will say that we are now going to follow a policy of religious neutrality. ठीक है? क्रिश्चियन मिशनरीज को थोड़ा सा अपना रोल चेंज करना होगा, नहीं तो रिवोल्ट हो रहा है इंडिया में. एंड नाउ द गवर्नमेंट विल ट्राई टू अपीज इंडियन पीपल. So for this you will have to convince Indian people that we are seriously doing something for the promotion of secular education in India. हमारा मकसद आपको ईसाई बनाना नहीं है, ये मैसेज आपको देना होगा. And in order to give this message, the government set up, okay, a General Council of Education, this institution in London. This will work for the Indian people. Now this general system or General Council of Education will do what? It will ask Lord Ripon that bhai, you are the viceroy now. So you should do what? An inquiry कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा काम कर रहा है. ठीक है? प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जो सिस्टम हम लेके आए थे वुड्स डिस्पैच से, क्या वो इफेक्टिव फंक्शनिंग कर रहा है या उसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है? तो लॉर्ड रिपन ने इस काम की जिम्मेदारी किसको दी? एक कमीशन को दी. उस कमीशन का चेयरमैन कौन था? विलियम हंटर. And that's why this is known as Hunter Commission of 1882. Clear? So now I hope this concept you have got now, that who appointed Hunter Commission? The answer is Lord Ripon. तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को यहाँ से फिल्टर कर पा रहे हो आप. ठीक है? कि कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है. ठीक है ना? तो ये कीवर्ड्स हैं, इनके बेसिस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर स्टेटमेंट को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इन एग्जाम द यूपीएससी विल राइट लाइक दिस. ये पूरा सेंटेंस ही लिख देंगे वो इन प्रीलिम्स स्टेटमेंट. दे विल राइट दिस entire sentence, that the General Council of Education requested Lord
लॉर्ड रिपन की जगह यहाँ लॉर्ड लिटन कर दो, हो गया गड़बड़। यही तो करते वो, they will pick a sentence and change some keyword, that they will write this entire line, that the General Council of Education requested Lord Lytton to Viceroy of India to institute an inquiry on Indian education, and Lord Lytton appointed, दो बार गलत लिखेंगे, Lord Lytton appointed William Hunter. So you will have to be very alert with some keywords and the key facts. These are called key facts. तो वहीं पे अलर्ट रहना है, सब जगह नहीं रहना है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस, इट विल टेक टाइम, ठीक है। एंड ऑन संडे वी विल डिस्कस एसे, क्लियर। एंड द एसे विल बी, देखो और 3 एसेज दिस ईयर, देयर वर 3 मोर एसेज, तो मैं सोच रहा हूँ उनको अभी डिस्कस करने की जगह थीम बेस्ड एसेज में उसको मैं कनेक्ट कर लूंगा, राइट। तो वो हमारा टाइम थोड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा, गॉट इट, ओके। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक, education. We will take at least 20 themes of education. I will discuss the content of the essay, and now according to those content and the perspectives of the essay, you will do what? You will write your answer, ठीक है ना, essay. So this Sunday we will try to conduct, okay, an essay class on this theme, that is education, ठीक है ना। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को फ्रॉम हियर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? बोर तो नहीं हुए? आर यू मेंटेनिंग द रनिंग नोट्स बना रहे हो? यही नोट्स आपके रिवीजन का काम भी करेगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल इन द सेंस आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्लियर। सो ऑब्वियसली नथिंग एल्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे भी मॉडर्न इंडिया में बहुत डिटेल में वो जाते नहीं, लेकिन मैं मॉडर्न इंडिया जब पढ़ा रहा हूँ तो वन पर्सपेक्टिव इज दिस विल बी हेल्पफुल इन एसे राइटिंग, दिस विल बी हेल्पफुल इन अदर एरियाज ऑफ जीएस आल्सो। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में बताया था कि पॉलिटी के क्वेश्चन में हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यू कैन नॉट फिल्टर द सब्जेक्ट्स, ओके, कि सबको हम क्या कर दिया, हमने अलग अलग कर दिया, वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? हैव एनी क्वेश्चन? नो, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम, वेलकम।